Warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I'm your education teacher, Mr. Taik, and today we are going to discuss the need and importance of education psychology for teacher. Dear students, yesterday I gave a presented Zoom classes where we discussed the importance or significance of educational psychology. So now, dear students, education psychology is very important because we cannot think better education without education psychology, unless and when psychology is the hand of psychology in education. So dear students, the child is imparted education only after making a thorough study of his interests, as you know, his aptitudes, potentialities, intelligence, and personality. And without the help of the problem of education cannot be solved. Both education and psychology are concerned with behavior. The research in psychology have a heavy impact on the aspect of education. So dear students, today we will discuss about the importance of education psychology for teacher, and how it is important for a teacher to use psychology in his classroom. So dear students, first of all we will try to discuss about one of the greatest education of their times, or a psychologist who what is their thoughts about the need and importance of education psychology. So dear students, Thomas Fuller, you know that Thomas Fuller pointed out that the successful teacher should read the nature of his pupils and must as he should read the books. Thomas Fuller एक साइकोलॉजिस्ट है, वो बताता है कि टीचर जिस तरह से किताबों को अच्छी तरह पढ़ता है, उसी तरह से उससे एक टीचर उससे शागिर्द को उसको पुपिल को उसको के पुपिल को भी अच्छी तरह पढ़ना है, तभी वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है. यानी कि यहाँ इसका मतलब ये है कि a teacher should psychologically read a student. He should be familiar with his likings, his dislikings. He should be familiar where from he comes. He should be familiar whether he is from an affluent background or he is coming from a poor family, and he should also know his whether the student is not having any physical deformity, whether his eyesight is good, whether he is not a glaucoma or myopia, hypermyopia, how he behaves in the class, whether the student is truant or whether the student is non-delinquent. So all these things makes a teacher great. Great in the sense that the teacher should know all things about his teacher. You know, dear student, John Adam, the greatest educator in the psychology, he says that the teacher should know John as Latin, because that means if the teacher is teaching John Latin, he should know the Latin, he should know the pros and cons of Latin language, and he should also know about the John. Okay. And there is other since the knowledge of nature of the child pupil, John, or the mind of pupil is educational psychology, the teacher must have the knowledge of educational psychology. That means the teacher should know everything about the student. So dear students, in the words of MD Jord, he says, Mr. Jord says that education is not everybody's cup of tea. Teaching is an art. Every Tom and Dick, Harry cannot teach. यानी मिस्टर जॉर्ड कहते हैं कि टीचिंग हर एक की बस की बात नहीं. इट्स नॉट ए कप ऑफ टी. यानी टीचर बनना हर एक की बस की बात नहीं है. टीचिंग एक आर्ट है, ये एक कला है, ये सबके पास नहीं होती. जिस तरह एक किसी के पास बुत तराशने की कला होती है, किसी को पेंटिंग बनाने की कला होती है, किसी को एक ब्रिज बनाने की कला होता है, ये सब लोगों के पास नहीं होते, ये आम लोगों के पास नहीं होते. किसी के पास एक कला होती है, वो उसके लिए मुख्तस है, वो किसी और के पास नहीं हो सकती है. सो उसने क्या है कि दैट एवरी टॉम एंड डिक कैन नॉट बी टीच. कोई एरा गहरा, टॉम एंड डिक मतलब हैरी एंड डिक, इसका मतलब कोई एरा गहरा टीचर नहीं बन सकता है. कि टीचर बनने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत है. द टीचर शुड बी साइकोलॉजिस्ट. He should be a great motivator. He should be a great enthusiast. He should be a great philosopher as well. Only then he can teach better. So dear students, Mr. Jord has rightly said that
every Tom and Dick cannot teach. So, dear students, you know that knowledge of educational psychology is very useful, and it is indispensable for the teacher because it gives knowledge to the teacher in the following fields. In what fields that is given knowledge to the teacher? So, dear students, teacher should know the innate nature of the student. This is the knowledge of the innate nature. That is, knowledge of the innate nature is necessary. That teacher should know the urges, instincts, potentialities, and uh, propensities. यानी टीचर एक बच्चे के बारे में है, उसके जबल, उसके खसलत के बारे में, उसके काबिलियत के बारे में, सबकी चीज़ों के बारे में टीचर को इल्मियत होनी चाहिए. यदि उसको इन सभी चीज़ों के बारे में इल्मियत होनी चाहिए तो एक अच्छा टीचर बन सकता है. So dear students, because there's those innate qualities, you know, or the prime movers of his behavior. So dear students, the teacher who knows psychology can make his teaching very successful while keeping the innate nature of the child. सो मतलब ये है कि टीचर को बच्चों के बारे में अच्छी तरह वाक़फ़ियत होनी चाहिए. ठीक है, जिस टीचर के पास साइकोलॉजी यानी बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे के नफ्सियात के बारे में इल्म ना हो, वो एक टीचर नहीं बन सकता है. ठीक है. तो दूसरी चीज़ है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता. हर एक बच्चा अलग अलग होता है. यानी कोई दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मेल नहीं खा सकता है किसी भी तरीके. सो यू नो डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो होते हैं स्टूडेंट हमारे क्लास में, वो एज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से अलग होते हैं, कैपेसिटीज़ काबिलियत के लिहाज से अलग वो होते हैं, कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से अलग, प्रोस्टेंटिटीज़, पोटेंशलिटीज़, एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट्स, मोटिव्स एंड मेनी अदर थिंग ट्रेट जो बच्चे के अंदर होती हैं. हर एक बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. ठीक है. तो हमारे स्कूल में कभी गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, कभी हमारे क्लास में कभी एक्सट्रीम हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन भी आते हैं. ठीक है. सो टीचर शुड नो एवरीथिंग अबाउट देम. सो टीचर इन बच्चों को तभी संभाल सकता है, तभी उनको अच्छी तालीम दे सकता है जब टीचर को सभी बच्चों के बारे में, उनके नफ्सियात के बारे में पूरा इल्म हो. ये बच्चा क्या चीज़ पसंद करता है, आए ये कहाँ किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये बच्चा कहीं इस बच्चे को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं ये बच्चा डिलन कोई शरीर बच्चा तो नहीं है, कहीं ये बच्चा क्लास में कोई गलत बर्ताव तो नहीं करता है. यानी उस सब चीज़ों के बारे में टीचर को बाज़ाब्ता इल्म होना चाहिए. जब भी टीचर को इन सभी चीज़ों के बारे में इल्म हो जाएगा तो वो एक बेहतरीन टीचर बन सकता है. अगर टीचर को इन सभी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होगा तो वो एक बेहतरीन टीचर नहीं बन सकता है. इसके साथ साथ टीचर को बच्चे के बिहेवियर में पूरा के यानी उसके टीचर के बिहेवियर के, स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में पूरी गिरफ्त होनी चाहिए. ठीक है. इससे टीचर को बच्चे की नफ्सियात के बारे में पता चलता है. यानी बच्चे का यानी टीचर को बच्चे के नर्वस सिस्टम, हम ग्लैंड्स, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, मोटिव्स, प्लेज, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में तब पता चलता है जब टीचर को बच्चे के बर्ताव के बारे में इल्म हो. ठीक है. तो जब टीचर यानी इसका मतलब ये नहीं डियर स्टूडेंट्स के टीचर ने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी फिर ये रट्टा लगा के याद रख, नहीं. इस टीचर को ये सभी चीज़ें पता होने, फिर ये क्लास में एप्लीकेबल होनी चाहिए. नॉलेज एप्लीकेबल जो वो सीखता है वो अप्लाइड नॉलेज होनी चाहिए, या हम जिसे कहें अप्लाइड रिसर्च, या दूसरे लफ्ज़ों में एक्शन रिसर्च टीचर को करना चाहिए, ताकि वो बच्चे की नफ्सियात को, उसके इमोशन, उसकी जबलत, उसकी खसलतों को समझे हैं, ताकि बच्चे के अंदर वो एक डिज़ायरेबल सेंटिमेंट्स डेवलप कर सके. ठीक है. तभी वो बच्चे के अंदर वो इन जो इनर टेंडेंसीज़ होते हैं, उसके बच्चे के अंदर जो मोटिव्स होते हैं, तो जब वो टीचर उन सभी चीज़ों को जानता होगा तो क्या होगा, तब टीचर एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्लास में दे सकता है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो क्लास बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है. ठीक है डियर स्टूडेंट.
تو جس ٹیچر کے پاس، میں نے آپ کو اس سے بھی بلور، جس ٹیچر کے پاس ایجوکیشن سائیکالوجی نہیں ہوگی، وہ ایک ٹیچر انٹرسٹنگ ٹیچر نہیں ہو سکتا، وہ ایک ٹیچر افیکٹو ٹیچر نہیں ہو سکتا، وہ ایک ٹیچر سکسیسفل ٹیچر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچر کو سبھی چیزوں کے بارے میں، بچے کے بیہیویئر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، بچے کے انڈیویجول ڈفرینس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، بچے کے انیٹ نیچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب ان ساتھ ساتھ چیزوں کے ساتھ بچے کے انکانشیس مائنڈ کے بارے میں ٹیچر کو علمیت ہونی چاہیے، اس کے مینٹل ہائیجین کے بارے میں ہونا چاہیے، یعنی اس بچے کو ساتھ ساتھ وہ ٹیچر گائیڈنس کرنا چاہیے، اس بچے اور ٹیچر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوگا وہ بہترین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو کلاس میں باضابطہ ریسرچ، ایکسٹرا ریسرچ کرنا چاہیے، ایکسپیریمنٹیشن کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ٹیچر کو میجرمنٹ اور ایوالویشن بھی کرنا چاہیے، وہ دیکھنا ہے کہ بچہ کہاں تک پہنچا ہے، جو وہ ٹیچر اسے پڑھا رہی افیکٹو ہو رہا ہے نہیں۔ اسی طرح امپرومنٹ کریکولم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں کہ خاص کر جو ٹیچر کے ہاتھ میں وہ ٹیچنگ میتھڈس ہے، ٹیچنگ میتھڈ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے کس طرح سے اچھی طرح سے وہاں سے جواب دے سکتا ہے، کہ ٹیچر کو باضابطہ الگ الگ میتھڈ آڈیو ویژول